Hello students, hope you all doing well. So here I am Gargi Pawar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management Program. So here I am back with an online lecture series on DRM subject. So let's start with lecture. In today's lecture, we are going to start second unit of your syllabus and going to cover first topic of your second unit, that is research design. Okay, so let's start with lecture. Just a minute. Yes. Yes. So research design. First of all, question arises: what is the research design? So basically, research design, in simple words, research design is a framework or an outline for your study or for your research. So in research design, you tell that how will you conduct your research. Okay. So in this provides you an outline for your study or outline for your research. So let's study. Just read. A research design is simply the framework or plan for a study that is used as a guide in collecting and analyzing the data. It is blueprint that is followed in completing a study. A research design is the specification of methods and procedures for acquiring the information needed. It is the overall operational pattern and framework of the project that stipulates what information is to be collected from which source by what procedure. So basically, research design is your framework or your plan. In simple words, if you say research design is the plan. See, when we are going to do any work and we start any work. When we start any work, we have to prepare in mind that how will we start this work. Okay, so we plan for that work. Okay, so जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं, दिन पहले हम उसका प्लान करते हैं माइंड में, हम सोचते हैं कि इसको कैसे करना है. That is called research design in research language. So अगर आप कोई रिसर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो you will prepare a research design, you will make a research design. So basically, research design is a plan, is a framework that is that to be followed for completing a study. Okay, so research design is a framework or a plan that is followed to completing your study. Now, research design is the specification of methods, procedures for acquiring the information needed. So, the information which is needed to research your topic, research on your topic, or to study of your topic, then a research design provides you the specification of methods, that which methods to be used for collection the data regarding this study or regarding this topic, or through which procedure you have to acquire. You should acquire these data. Okay, data or information. So basically, research design tells you that for the study on a particular topic, or to research on particular topic, which kind of data you will need it. Okay, how will you collect these data? Research design tells us the methods of collection of data and the procedure, through which procedure you will acquire these information or these data. Okay, तो रिसर्च डिजाइन आपको बताएगा किस मेथड से आपको डेटा कलेक्ट करना है. रिसर्च के लिए डेटा आपको जो भी रिगार्डिंग आपके डेटा है, रेलिवेंट डेटा है, कौन से रेलिवेंट डेटा है, उनको किस मेथड से आपको कलेक्ट करना है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन जो आपको नीडेड है उसको कलेक्ट करें. It is the overall operational pattern or framework of the project which stipulates what information is to be collected or which sources by what procedure. So basically, कौन सी information आपको चाहिए इस study को complete करने के लिए, उसको कहाँ से आपको collect करना है, क्या sources होंगे, and what will be your procedure to collect that information or that. So overall, research design provides you a framework or a plan to collect the data, to inform you about the sources of data and what procedure you will collect that data, to which procedure you will collect data, and what will be your methods to collect the data, what will your procedure to collect data. All these information will be provided in research design. So once you will design your research
After then you can easily think that which information is required for our study, through which method we should collect the information, and what procedure should be followed. Okay, तो रिसर्च डिजाइन आपका ये चीजें बताएगा ना. रिसर्च डिजाइन से आपको बेनिफिट क्या होगा? रिसर्च डिजाइन से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको, अगर आप रिसर्च स्टार्ट करने से पहले रिसर्च डिजाइन अगर बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कहाँ से कलेक्ट हो सकती है, क्या सोर्सेज होंगे, क्या मेथड होंगे, क्या प्रोसीजर होगा. ओके, ऑल्दो अगर आप रिसर्च डिजाइन नहीं बनाते, सीधा रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं, तो इट विल टेक सो मच टाइम और सो मच कॉम्प्लिकेशन कि हमको हमको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हमको डेटा चाहिए क्या. ओके, हमने रिसर्च तो स्टार्ट कर दिया, बट हमको ये नहीं पता कि हमको डेटा चाहिए कौन सा. ओके, तो अगर आप बिना रिसर्च डिजाइन के अगर रिसर्च स्टार्ट कर देंगे तो इट विल टेक so more time, and इवन कॉम्प्लिकेशन बहुत आएगी आपको रिसर्च करने में. इसलिए रिसर्च डिजाइन आपको इजीली, रिसर्च अगर आप डिजाइन कर लेंगे तो आप तो कहीं एक तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है आपको कहाँ कहाँ से, आप सीधा वहाँ जाएंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे, इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. अगर आपने रिसर्च डिजाइन ही नहीं बनाई तो आपको पता ही नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से ये ले, कौन से सोर्सेज है, तो इट विल टेक सो मेनी टाइम एंड कॉम्प्लिकेशंस एट द सेम टाइम. Okay, so now see, there is some features of a good research design. So see, first is objectivity. Objectivity means so आपकी जो रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिविटी है उससे रिलेट करना चाहिए आपका रिसर्च डिजाइन. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके रिसर्च डिजाइन की. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च. ओके, आपका रिसर्च डिजाइन स्पेसिफिकली, आपके रिसर्च डिजाइन को अगर कोई पढ़ता है तो उसको स्पेसिफिकली समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च. ओके, then second is reliability. So your research design must be proper reliable, कि आप एक्चुअल में रिलायबल होना चाहिए, कि एक्चुअल में आप यही इंफॉर्मेशन चाहिए. कि हो सकता है आपका रिसर्च डिजाइन कुछ और इंफॉर्मेशन बता रहा हो कि आपको इस रिसर्च के लिए, आपको इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए, जबकि आपने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो आपको कुछ डिफरेंटली इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, तो रिसर्च डिजाइन जो आपका रिलायबल होना चाहिए, वो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है दैट शुड बी रिलायबल. ओके, जिन पे ट्रस्ट किया जा सके. वैलिडिटी, your research design must have the validity at the same time. Then journalization. Journalization means research design ऐसा होना चाहिए जर्नल वे में भी. journalization मतलब जर्नल जो सिचुएशंस है, जर्नल जो हर चीज, एक जर्नल मतलब हर चीज में फिट होने वाला. ओके, कैसा भी एनवायरमेंट हो, कैसा भी एरिया हो, कैसा भी कुछ भी सिचुएशन हो, सब में फिट हो सके आपका रिसर्च डिजाइन. जर्नलाइजेशन मतलब हर एक लेवल पे इक्वली अप्लाई हो सके. Then adequate information, आपके रिसर्च डिजाइन से प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए. जितनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थ्रू योर रिसर्च डिजाइन. एंड अदर फीचर, द रिसर्च डिजाइन मस्ट बी फ्लेक्सिबल, अडैप्टेबल एंड एफिशिएंसी. तो आपका रिसर्च डिजाइन क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें. जब चाहो तब आप अपने रिसर्च डिजाइन को चेंज कर सकते हो. उसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए जो आपको अपने रिसर्च को चेंज करना पड़े. इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं, जहाँ से आपको बताया गया था रिसर्च डिजाइन में, आपने जो सेट किया था कि आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां से सपोज आप इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे उस प्लेस पे कोई वॉर हो गई है, या सिटी में या पर्टिकुलर कंट्री में कोई वॉर हो गई है, कोई भी अपोजिट सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, आप वहां से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हो, तो आपका रिसर्च जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं. अडेप्टेबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए. ये सारी क्या होंगे फीचर्स ऑफ योर गुड रिसर्च. Now there are some elements of research design. So let's see the elements of your research design. Yes, see, these are the essential elements of the research design. So see, the essential elements of research design are accurate purpose statement. आपका accurate purpose क्या है स्टडी का, उसका एक स्टेटमेंट होना चाहिए, क्लियरली वो डिफाइन होना चाहिए कि what is your accurate purpose, what is the purpose of your study, what is the right purpose, proper purpose of your study. Okay, that it should be clearly defined in your research design. Then second, techniques to be implemented for collecting and analyzing research. तो जो भी आप टेक्निक्स यूज कर रहे हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, वो इम्प्लीमेंटेबल होनी चाहिए, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. ऐसी टेक्निक्स आपकी होनी चाहिए. ऐसी टेक्निक यूज जिसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते. ओके, the next is the method applied for analysis
is the collected detail. आप collected detail को हमने collect तो कर लिया, कुछ techniques use करके collect तो कर लिया, लेकिन उसको analyze करने के methods आपके क्या होंगे, वो आपका specifically detail में mention होना चाहिए. Types of research methodology. In research design, it is clearly mentioned that which kind of methodology you are going to use, you are taking in use. Okay. So आपके जो research methodology you are going to use, it must be clearly defined in research design. Okay. Probable objections for research. If there is any objection will occur in future, or there is any objection on your research, then that is also be clearly defined. Or probable error objection means the objection which occur once you start your study. Okay. Or the objection will occur in future. So probable error क्या क्या आपके objection occur हो सकते हैं आपके research पे, वो भी आपके clearly research design में mention. Setting for research study. Settings for research study मतलब systematic करना, किस हिसाब से आप research study करेंगे. Then timeline. What will be the tenure of your research, or what will be the timeline, time limit. What will be the time limit of your research. ऐसा नहीं है कि आपका research 10 years तक चल रहा है, 15 years तक चल रहा है, 20 years तक चल रहा है, और चलते जा रहे लेकिन एक फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए कि कितने टाइम तक हम रिसर्च कंप्लीट करें. एंड मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस. जो भी आपने एनालिसिस किया उसका प्रॉपर आपके पास मेजरमेंट होना चाहिए. Okay. So these are the essential elements that should be there in research design. Okay. Now let's talk about the types of research design. Okay. So there is three types of research design that is relevant for your syllabus. That is exploratory research design. Okay. Second is descriptive research design, and third is experimental research design. So let's talk about exploratory research design. Exploratory research design is conducted for a research problem when the researcher has no past data or only a few studies of reference. Sometimes this research is informal and unstructured. It serves as tool for initial research. It provides a hypothetical or theoretical idea of the research problem. It will not offer complete solution for the research problem. This research is conducted in order to determine the nature of problem and helps the researcher to develop better understanding on the problem. Exploratory research is flexible and provides the initial groundwork for the future research. Exploratory research requires the research to investigate different sources such as published secondary data from other surveys, observation of research items, and opinion about the company products and services. So what is exactly exploratory research design? So exploratory research design आपको कब करना है, ये डिजाइन, ये मेथड आपको, ये रिसर्च डिजाइन आपको जब यूज करना है जब आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं हो, उसके ऊपर पहले कोई स्टडी नहीं हुई हो, या बहुत ही कम स्टडी हुई हो जो भी अनक्लियर हो, दैट इज नॉट प्रॉपर्ली क्लियर स्टडी. ओके. तो ऐसी कोई भी स्टडी आपकी प्रॉब्लम से पहले कोई स्टडी नहीं हुई है या हुई है, तो ऐसी स्टडीज है जो कि बहुत ही कम है फॉर द रेफरेंस. रेफरेंस के लिए बहुत ही कम है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी क्या है, अनक्लियर है, नॉट क्लियरली डिफाइंड. ओके. दैट प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. So in this case you will conduct the exploratory research. Okay. So in exploratory जो research है वो एक initial research है, क्योंकि उससे पहले हम ये मान के चलते हैं कि आपके प्रॉब्लम जो है, ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर कभी रिसर्च हुआ ही नहीं है, या हुआ है तो वो नॉट क्लियर नहीं है. That problem is not clearly defined in previous research. अगर previous research हुआ भी है तो वो problem clearly defined नहीं है. Okay. और उनसे कोई clear information नहीं मिलती है. So if you are going to you are going to start an initial research on your problem, or the first research on your problem, that is then at that time you will conduct the exploratory research. Okay. So exploratory research is the initial research. It will provide a hypothetical or theoretical idea for research problem. It will not offer complete solution of the research problem. This research is conducted to order to determine the nature of problem and help researcher to develop better understanding of the problem. So through this exploratory research, a researcher helps to develop a better understanding of the problem, because previously there is no research on that kind of problem. That's why it helps to researcher to develop a better understanding of that problem. Okay. Exploratory research is a flexible and provide initial groundwork for the future research. So seeing this line, exploratory research is flexible and provides
provides the initial groundwork for future research. So basically, this research provides the groundwork. It provides ground basis for the फ्यूचर रिसर्च. फ्यूचर में अगर इस प्रॉब्लम पे कोई रिसर्च करेगा तो उसको ग्राउंड उसके बेसिस कुछ मिलेगा, क्योंकि आप पहले ही प्रॉब्लम पे रिसर्च कर चुके हैं, तो आपको कोई डेटा नहीं मिला प्रीवियस डेटा से, लेकिन फ्यूचर में अगर उस प्रॉब्लम पे कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो चुका है तो फ्यूचर में जो भी किसी को सेम प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करवाना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, जो आपका क्या बनेगी, आपका ग्राउंड बनेगी जो फ्यूचर में जो लोग रिसर्च करेंगे. So this is called exploratory research design. So exploratory research design आप कब करवाएंगे, जब भी आपकी प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं हो, पहले उस पर किसी ने अगर रिसर्च नहीं करा हो, और करा हो तो क्लियरली डिफाइन नहीं किया उस प्रॉब्लम को, क्लियरली कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा हो, क्लियर नहीं हो डेटा उसके, then you will conduct exploratory research. So see, there is an example of exploratory research design. Fresh Bite is 1.5-year-old e-commerce startup company delivering the fresh foods as per the order to customers' doorstep through its delivery partner. Okay, the company operates in multiple cities. Since its inception, the company achieved a high sales growth. However, after completion of that first year, the sales started declining at speedy rate. Due to lack of historical data, the sales director was confused about the reason for this declining sales. So he preferred to appoint a marketing research consultant to provide an exploratory research study in order to discern the possible reasons rather than the making assumptions. So basically, see what example says, there is a brand who there is a company or a brand who is working in e-commerce. Okay, and the work of that company is to deliver the fresh food at the customer's doorstep or at the customer's home delivery. Okay, a company who provides the home delivery of the fresh food. Now, in first year, the sales growth rate is very high. Okay, but after 1 year, the sales growth is continuously declining at speedy rate of that company. Now, due to lack of historical data, that means on this problem, there is no previous research taken place. No previous research taken place. That's why the director is not able to understand why it is happening. Why the sales in later years is going on decline. Okay, so in that case, in this situation, that director have to conduct the exploratory research. So, क्योंकि उसके पहले कोई भी उसके ऊपर research नहीं हुआ, so director have to conduct exploratory research in this kind of situation. Okay, now the second research is descriptive research design. Second type of research design is descriptive research design. Descriptive research design is a type of research that describes the population, situation, phenomena that is being studied. It focuses on answering how, what, when, and where question if research problem rather than the why. So descriptive research design आपकी research problem की characteristics को बताएगा, describe करेगा about your population, your situation, or your theory, whatever. So about your population, about your problem, this research will be described in detail. But ये research design से किन questions का आंसर देगा, how, what, when, and where. ये रिसर्च ये प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई, क्या प्रॉब्लम है, कब अराइज हुई और कहाँ से अराइज हुई. ओके, बट ये क्यों अराइज हुई इस बात की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, रिसर्च डिजाइन नहीं देगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन डज नॉट वर्क ऑन व्हाई क्वेश्चन. ओके, this is mainly because it is important to have proper understanding of what the research problem is about before they investigate why it exists in the first place. Okay, so ये research design क्या आपको बताएगा कि क्या research problem instead of why it exists at this place. Okay? For example, investor considering an investment of ever-changing Indian housing market needs to understand what is the current state of the market is and how it changes and when it changes before asking for why. This is where descriptive research comes. So when an investor wants to invest in Indian housing market, now सबसे पहले वो जो investor होगा उसको क्या क्या information चाहिए कि how this market works, how it changes, what is changes takes place, when these changes take place,
yeah, these three type of question that this investor wants to know. Okay, सबसे पहले इन्वेस्टर, बीइंग इन्वेस्टर आप भी सबसे पहले क्या, अगर किसी मार्केट में आप जाते हैं इन्वेस्ट करने, तो आप क्या क्या पूछेंगे कि कैसा मार्केट है ये, इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं और कब कब चेंजेस आते हैं, उसके बाद आप पूछेंगे कि ये चेंजेस आते क्यों है। ओके, तो यहाँ तक के लिए आपको क्या चाहिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन चाहिएगा। यू हैव टू कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च for this problem. So descriptive research basically gives the answer how, what, where, and when, not the why question. Okay. Now the third and last research design is experimental research design. So see, what is the experimental research design? Experiment research is a scientific approach to research where one or more independent variables are manipulated and applied to one or more dependent variables to measure their effect on level. The effect of independent variable on the independent variable is usually observed and recorded over some time. To aid researchers in drawing a reasonable conclusion regarding the relationship between these two variable types. So when you want to identify the quantum of the relationship between two variables, that is independent variable and independent variable, how the independent variable getting affected, how the dependent variable is affected by the independent variable, and on what quantum, up to what quantum dependent variable is affected by the independent variable. To measure this degree of effectiveness, we will conduct the experimental research. तो आपके पास दो फैक्टर्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में आपका जो भी इफेक्ट जो इनके बीच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, उसको मेजर करने के लिए जो आप रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. Okay, so let's have an example. If there is a company on which price is a depending variable, always it happens that price is always a depending variable on some factors. किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस उसके कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है उस प्रोडक्ट से, उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा. So basically we talk the price is dependent variable on demand. Okay, so price dependent variable है डिमांड पे, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है, लाइक सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर एंड अदर. सो डिमांड प्राइस को कितना इम्पैक्ट कर रही है, कितना अफेक्ट कर रही है, इसको मेजर करने के लिए जो आप एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन यूज लेंगे, जो रिसर्च डिजाइन यूज लेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. तो दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको क्वांटम ऑफ डिपेंडेंसी देखना है कि कितना डिपेंडेंसी है इन दोनों के बीच में, उसको मेजर करना है, तो दैट दिस सिचुएशन यू विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड यू विल यूज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, so this is all about the research design and types of research design. In next lecture we will see some more topics on research design. Okay, so that's it for today. Thank you guys.